नद्यश्च नदाश्च नद्यो नदाश्वतास्रांश्च मनाश्च न ज्वलत्यग्निराज्येन खलु यमि किं विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्त्यर्षभा वृजे देवतानि रुदन्ति व स्विद्यन्ति युज्ज्वलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्यानाकराश्रमा भ्रष्टश्रियोन्रानन्दा किमघं दर्शयन्ति न मन्ये एतैर्मोत्पातैः नूनं भगवता पदैः अनन्यपुरुषश्रीभिर्हीना भूतैर्भूर्हत सौभगाः इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञा प्रत्यागमत् ब्रह्मनिरपुर्या कपिध्वजा तं बाधयो निपतितं यथा पूर्वमातुरम् अथो वदनमभ्यन्दोन् सृजन्तं नयनाब्जयो विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छाय मनुजं नृप पृच्छति स्म शृण्मध्ये संस्मरन्नारदेरितं श्रीदृष्टिर्वाच कचिद्दानतपुर्यां न स्वसना सुखमासते मधुभोजदसारहार सात्वदान्तकवृष्णया सूरो मातामह कच्चित् स्वस्त्यास्ते वाथमारिषा मातुलः साञ्जा कच्चित् कुशल्यानकदुन्दुभिः सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्या सात्मजा आसते सष्णुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं कच्चिद् राजा उकोजीवत्यसत्पुत्रोस्य चानोज हृदय कः सस्रो क्रूरो जयन्त गतसारणा सते कुशलं कच्चिद् ये च शत्रुजिदादया कच्चिदास्ति सोमरामो भगवान् सात्वतां प्रभो प्रद्युम्ना सर्वृष्णीनां सुखमास्ते महारथ गम्भीरयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत श्रेणश्चावृदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये चक्काष्णप्रवरः सपुत्राः शिवयादयादर्थैवानुचरा सौरे सुदेवोदयादया सुनन्दनन्द न्याय चान्ये सात्वतर सभा अभिस्वस्त्यास्ते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रयाः अभिस्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्ध सौहृदा भगवान् अपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सला कच्चित् पुरेषु धर्मायां सुखमास्ते सुहृदता मंगलाय च लोकानां जयमाय च भुवाय च नास्ते दुकुला बोधा वाद्यो नन्तपुषका अपमान्यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्त्रियां यदवोर्चिता क्रीडन्ति प्रमानन्दं महापुरुषका इव यत्पाद शुश्रू षड्मुख्यकर्मणा सत्यादयोद्व्यष्टसहस्रयोषिता निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रा युधवल्लभोचिता यद्बाहुदण्डा युजयानुजीविनो यदो प्रवीरा यकुतो भयामुहु अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहृताम्बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् कच्चित्तेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो वज्ञातः किं त्वा तात चिरोषिता कच्चित्नाभियते तो भावै शब्दादिभिरमङ्गलै न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आशय प्रतिश्रुतं कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपचितं सत्त्वं नात्याक्षि शरणप्रदा कच्चित्त्वं नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्मानसै नासमै पथे अपि सित्पर्यभुङ्क्थास्त्वं सम्भोज्यान्वद्बालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदक्षमं कच्चित् प्रेष्ठमतमे नाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मनसेतेऽन्यथा नरूप स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः श्री बालकृष्णचरणकमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचदशोऽध्याय श्रीसूत उवाच एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्चितः शोकेन शुष्यद्वदनत् हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुध्यायन्नाशक्नोत् प्रतिभासितुं कृच्छ्रेण संस्तभ्यश्च पाणिना मृजनेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्धः प्रणयोत्कण्ठकातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा। श्री अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ये स मृतकः प्रोच्यते यथा यत्संश्रया नृपः गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोर्तं खलु वया विहतश्च मत्स्य सञ्जीकृतेन दुःसाधिगता च कृष्णा स्यत्सन्निधावहुमुकाण्डवमग्नयेदा मिद्रं च सामरगर्णं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन्नृपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोङ्घ्रिमहन्मखार्थे आर्योनुजस्तव गजा युतसत्त्ववीर्या
तेनाहृता प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवादिमक्लिप्तमजाभिषेकस् श्लाघिष्टचारुकवरं कितवै सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रमुख्या यस्तत्स्त्रियो कृतहरेश विमुक्तकेसा केको जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छात् दुर्वासोर्विहिता देवताग्रभुग्या शाकान्नशिष्टमुपयुज्ये तस्त्रिलोकीं तृप्ता ममंसतसलिले विनिमग्नसङ्घा यत्तेजसात भगवान् युधिशूलपाढिर्विस्मापितः सकिरिजोऽस्त्रमदान्निजम्बे अन्येऽपि चाहमनुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवा सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्य पुरुषता पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धवा कुर्बलाब्धिमनन्तपार मेको रथेन ततरे हमतार्यसत्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्या यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमूस्वदभ्र राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रे च रोमं विभो रथयूतपाना मायुर्वनाश्च दृशा सह ओज आर्च्छत् यद्दोषमां प्रणीतं गुरुभीष्मकर्ण नप्तृत्रिगर्तसलसैद्धवबाल्लिकाध्यै अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशोन्निरिहरिदासमिवासुराणि सौत्येवृता कुमनितात्मत ईश्वरो मे यत्पादमत्मभवाय भजन्ति भव्या मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठं न प्राहरन् यदुनुभावनिरस्तचित्ता धर्मान्युदाररुचितस्मितशोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनन्दनेति सञ्जल्पिता नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लठन्ति हृदयं मम माधवस्य सय्यासनाटन विखत्थन भोजनादिर्स्वैक्याद्वयसृतवानिति प्रलब्धा सख्यो सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरगं मे सोऽहं नृपेन्द्रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्या अध्वन्युरुक्रम परिग्रह मंगरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव निर्जितोऽस्मि तद्वै धनस्व इह्वास रथो ह्यास्ते सोऽहं रथी निपतयो यतमान्वनन्ति सर्वं चक्षेण जतभूत शरीररिक्तं भस्मानुतं कुहकराद्विमोक्तमुष्याम् राजन्स्त्वया विपृष्टानां सुहृदां न सुहृत्परे विप्रशापविमूढानां निगतां मुष्टिभिर्मिता वार्णीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चितो पञ्चावशेषिता प्रायेण तद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो जिघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथा जलौकसां जले यत्त्वन् महान्तो दन्त्यणीयशः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथा एवं मल्लिष्ठैर्युधभिर्महद्भिर्रतरान् विभो यदून् यदुभिरन्योन्यं भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दावीतानि मे श्रीसूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीत् विमलामति वासुदेवाग्रनुध्यायन् परिबृंहितरङ्घसा भक्त्या निमृत्ताशेष कषायधिषणोऽर्जुना गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरद्यागमद्विभो विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या सञ्छिन्नद्वैतसंशया लीनप्रकृतिनैर्गुण्या दलिङ्गत्वाद् असम्भवा निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय पतिं चक्रेण नृतात्मा युधिष्ठिरा पृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नासं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संस्कृते यया हतभुवो भारं तां तनुं विजहावज कंटकं कटकेनैव द्वयं चापि शितुः यथा मत्स्यादिरूपाणि दत्ते जह्यात् यथा नट भूभारान् क्षिप्तो येन जहु तच्च कलेवरं यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा तदा हरेवा प्रतिबोधचेतसा मधर्महेतु कलिरन्ववर् युधिष्ठिरस्तत् परिसर्पणम्बुध पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभा नृतजे महिंसना यधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात् स्वराट पौत्रं विनयिनमात्मनः समं गुणैः तोयनीभ्यः पतिं भूमेरभ्यसिञ्चत् गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रं सूरसेनपतिं ततः प्राजापत्यान् रूप्यष्टिमग्नीन् पिबदीश्वरः
विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्नाशेषबन्धना वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे यजो हवीत् तृत्वे हुत्वात् पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनि सत्त्वमात्मन्यजुहवीत् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये क्षीयवासा निराहारो बन्धवाङ्मुक्तमूर्धज दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमाणो निर्गाद अशृण्वन् बधिरो यथा उदीचीं प्रवेशासां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तेत यतोगता सर्वे तमनुर्निर्जग्मुर्भ्रातरः कृतनिश्चया कलनाधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वा यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुरवैकुण्ठचरणाम्बुजं तद्ध्यानोकृतया भक्त्या विशुद्धिदिष्णा हरे विशुद्धदिष्णा परे तस्मिन् नारायण पदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुर्वापान्ते असद्भिर्विषयात्मभिः विदोलकल्मषास्थाने वर्जेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनवानमपेक्षतां वासुदेवे भगवती एकान्तपतिरापतम् यः श्रद्धयैत भगवत् प्रियाणां पाण्डो सुताना मिति संप्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पंचदशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षोडशोऽध्याय। श्रीसूतोवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महीं महाभागवतः ससासः यथा हि सूत्यामभिजातको विदा समाधिसन् विप्रमहद्गुणस्तथा स उत्तरस्य तनयामुपये मयिरावतीं जन्मे जयादीन् चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान् आजहारा स्वमेधान् स्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् सारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचरा निजग्राहौ जसा वीरा कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिस्नं पदा। श्रीशौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः निर्देव चिन्नदृग् शूद्रकोसौ गां यः पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम् अथवा अस्य पदाम्भोजम् अकरन्दलिहां सतां किमन्नैरसदालापैरायुषो यत् सदभ्यया क्षुद्रायुषामृणामङ्गं मर्तनामृतमिच्छताम् एतोपभूता भगवान् प्रत्योषा मित्रकर्मणि न कश्चिन्मृते तावत् यावदास्तैहान्तका एतदर्थं हि भगवान् आहुतः परमर्षिभिः अहो नृलोकेऽपि एत हरिल्यामृतं वचा मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषस्य वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवाच व्यर्थकर्मभिः। शिशुत उवाच यदा परीक्षित् कुरुजाङ्गले शृणो कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः सरासनं संयोगसौण्डिराददे स्वलङ्कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृकेन्द्रध्वजमाश्रितपुरात् वृतो रथास्वत् विपपतियुक्तया स्वसेनयादि विजयाय निर्गतः। भद्रास्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिं तत्र तत्रोपशृण्वानास् पूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च एषा कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातमस्वत्थां नोस्त्रतेजसा स्नेहं च वृष्टिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रत्युज्यं वितलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामना सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णोर्भक्तिं करोत् नृपतिश्चरणारविन्दे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहन् नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे धर्मपदैकेन चरन् विच्छायामुपलभ्यगां पृच्छति स्मास्त्रवदनां विवत्सामिव मातरं। श्रीधर्म उवाच
कच्चित् भद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छायासि म्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्जनाम्ब पादैर्न्यूनं शोचसि मयिकपादमात्मानं वावश्लैर्भोक्ष्यमाणम् आहो सुरादीन् हृतयज्ञभागान् प्रजा उतस्मिन् भगवत्य वर्षति अरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यतो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म यब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्यान् किं छत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवासः स्मानभ्यवायोन्मुखजीवलोकं यद्वाम्बते भूरिभरावतार कृतावतारस्य हरे धरित्रे अन्तर्हितस्य स्मृति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलम्बितानि इदं ममाचक्षु तद्वाधिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतहं सौभगं श्रीधरण्युवाच भवानि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहै सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आर्जवं समो तपस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिश्रुतं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं धृस्मृति स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च प्राग्गल्भ्यं पृषताशीलं सवोजो बलं भगा गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानो नहङ्कृति एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणा प्रार्थ्यामः तत्मिच्छद्भिर् न व्यन्ति स्म कर्हिचित्तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पापमना कलिनेक्षितम् आत्मनं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुतिथं यद्पाङ्गमोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत्प्रपन्ना शास्त्री स्ववास मरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजते नुरक्ता तस्याहमब्जकुलिसा कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवता समलङ्कृताङ्गी त्रिनत्यरोच उपलभ्यततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृजत् उत्स्मयतीं तदन्ते यो वै ममाति भरमा सुरवंशराज्ञा मक्षोहिणी सतमपा नुददात्मतन्त्र त्वं दोस्थमूनपदमात् मणिपौरसेण सम्पादयन् यदुसुरं म्यमभिभ्रदङ्गम् का वा सयेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्किताय तयोरेवं कथयतो पृथ्वीधर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पृथ्वीधर्मसंवादो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशोऽध्याय। श्रीसूतोवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं दशेन पलाञ्छनं वृषं मृणालधवलं वेहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं सूत्रराडितं कां च धर्मदुघां दीनां वृषं शूद्रपदाहतां विस्सां शास्त्रवदनां क्षामां यवसमच्छतिं पप्रच्छरतमारूढा कातस्वरपरीच्छिदं मेघगम्भीर्या वाचा समारोपितकारमुका कस्तं मच्छरणे लोके बलात् धनस्य बलान् बलीन् न देवो शिवेशेन नटवत्कर्मणा द्विजा यस्तं कृष्णे गते दूरं स गाण्डीवधन्वना शोच्योस्य शोच्यान् रहसि प्रहरन् वदमर्मसि त्वं वा वृणालधवलापादिर्न्यूना पदाचरन् विश्वरूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन् न जात पौर्वेन्द्राणां दोर्दण्ड परिरम्बिते भूतलेनु पतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां सुच
मार सौरभेयानुश्चो वेत्तु ते वृषलाभयं मारोदीरम्भभद्रते गलानां महिषास्त्री यस्य राष्ट्रेर्जा सर्वास्त्रस्यन्ते साध्विसाधुभिः तस्य मत्तस्य तस्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गति एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्ता नामार्तिनिग्रह अत एनं वदिष्यामि भूतद्रोमसत्तमं को वृष्यत् तव पादान् स्त्रीं सौरभेय चतुष्पदं मा भूपंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् अधाख्याय वृषभद्रं वा साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणं जनेनागस्यगं युञ्जन् सर्वतोस्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते अनागस्वेह भूतेषु या आगस्कृन्निरङ्कुशा आहर्तास्म भुजन् साक्षादमर्त्यस्यापि साङ्गदं राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनं सात्सतोऽन्यान् यथा शास्त्रं मनात् पद्योत्पथानिह श्रीधर्म उवाच एतद्वा पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचा येषां गुणपडै कृष्णो दौत्यादो भगवान् कृता न वयं क्लेशबीजानि यतस्य पुरुषर्षभ पुरुषं तं बीजानीमो वाक्यमेदविमोहिता केचित् विकल्पवचना औरात्मात्ममात्मना दैव मन्ये परे कर्म स्वभावं प्रे प्रभुम् अप्रतर्क्यात्मनिर्देश्यात् इति केष्वपि निश्चया तत्रान् रूपा राजस्य मृष्य समनीषया शिशुत उवाच एवं धर्मे प्रवृत्ति स सम्राट् दुस्सत्तम समाहितेन मनसा विखेद परिचष्टतम् श्रीराजोवाच धर्मं ब्रवीष धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यदधर्माकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया दूनं गतिरगोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चया तपा शौचं दयां सत्यमिति पादाः कृते कृता अधर्मान् संस्त्रियो भग्ना स्मयसङ्गमदैस्तव इदानीं इदं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेत्यदः तम जिघ्रिक्षत्य धर्मो या मनते नैतः कली एयं च भूर्भगवतान्यास्तोरुभरास्ति श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका शोचत्यश्रुकुला साध्वी दुर्भगे भोज्जिताधुना आब्रह्मण्यानुपव्याजा शूद्रा भोक्षन्ति मामिति इति धर्ममहीं चैव सान्त्वयित्वा मारथा विषादमादते घटकं कलिगे धर्मभेतवे तं जिघासमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छलं तद्बालमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वला पत्तं पादयोर्वीरा कृपया दीनवत्सला शरण्यो नावधि श्लोके आचेदं न सन्निव श्रीराजोवाच न ते गुडाके सयसोधराडा बद्धाञ्जलेर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धु त्वां वर्तमानं नरदेवदेहे स्वनु प्रवृत्तो यमधर्मपूगा लोभो नृतं च यमनार्यमंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भ न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्ये न च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरं यज्ञवितानि विज्ञा यस्मिन् हरिर्भगवानीज्यमान ईज्यामूर्तिर्यजतां संतनोति कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमाना अन्तर्बहिर्वायुर्वै स आत्मा श्रीसूत उवाच परीक्षितैव मादिष्टः सकलिर्जातवे पथो तमुद्या तासिमाहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतं श्रीकलिर्उवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमत्वाज्ञया लक्ष्ये तत्रापि त्वामात्ये सुरसरासनं तन्मे धर्मृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देशुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठंस्तेऽनुशासनं शिशुत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददौ द्योतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधा पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभो ततो नृडं वदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम् अमूनि पञ्चस्थानानि यधर्मप्रभुः कली औत्तरेयेण दत्तानि निवसत् तन्निधे सकृत्
अथैतानि न सेवेत बभूषो पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राज्ञा लोकपतिर्गुरो विशस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्दत आश्वास्य महीं च संवर्धयत् स एष एतर्ह्यध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षता आस्ते धुना राजर्षिः कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् गजास्सवे महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छ्रवा इत्थं भूतानुभावोऽयमभिमन्युस्ततो नृपा यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्याय। श्री बालकृष्ण चरणकमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथाष्टादशोऽध्याय। श्रीसूत उवाच यो वै द्रौण्यस्त्र विप्लोष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवता कृष्णस्याद्भुतकर्मणा ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षरात् प्राणविप्लवात् न सम्मोहुरुभयात् भगवत्यर्पिताशया उत्सृज्य सर्वथा संगम विज्ञाताजित संस्थिति वैयासिकैर्जौ शिष्यो गंगायां समकलेवरम् नोत्तम श्लोक वार्तानां जुस्तां तत्कथामृतं स्यात् संभ्रमन्त भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजं तावत् कलिन प्रभवेत् प्रविष्टोऽपि सर्वतः यावदीशो महानुर्व्यामाविमन्यव एकराट् यस्मिन्नान्यर्येव भगवानुत्ससर्जगां तदैहेवानुवृत्तो सावधर्म प्रभवः कलि नानुद्वेष्टि किलं सम्राट् सारङ्गैव सारभुक् कुशलान्यास्सद्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत् किं नु बालेश्वरेण कलिना धीरभीरुणा अप्रमत्ता मृतेषु यो वृकोन् सुवर्तते उपवर्णितमेतद्वा पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतमाख्यानं यद पृच्छत या कथा भगवता कथनीयोरुकर्मणा गुणकर्माश्रयापम्भि संसेव्यास्ता बभूषुभिः श्रीर्षयौचुः सूतजीव समासौम्य शाश्वतीर्विशदं यसा यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यानां मृतं हि न कर्मण्यस्मिन् नसाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान् अपावयति गोविन्द पादपद्मासवं मधु तुलयामुलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुतासि स को नाम तृप्येत् रसवीत् कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानामगुणस्य जगमुर् योगेश्वराये भवपाद्ममुख्या तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन् स वै महाभागवत परीक्षित् येनापवर्गाख्यमद प्रबुद्धि ज्ञानेन वैया सखिशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलं तन्न परं पुण्यमसंवृतार्थ माख्यानमत्यत् भूतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ता चरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम्। श्रीसूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं बहत्तमानामविधानयोग कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य सोऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वात् यमनन्तमाहु एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिसायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूते
यस्यांग्रिरेणुं जुसते न भीप्सो अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चो परितार्हणाम्ब शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थ यत्रानुरक्ता ससैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन्न हिंसोपशमः स्वधर्मः अहं हि पृष्टोर्यमणो भवद्भिः आचक्ष आत्मा वगमोत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चिता एकदा धनुरुद्यम्य विचरन्नृगयां मने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृष्टुतो वृषं जलाशयमचक्षाण प्रिये सतमाश्रमं ददर्शमणिमासीनं शान्तं मीलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिं भारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रयं विप्रकेण जटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च विशिष्य तालुरुदकं रथा भूतमयाचित अलब्धतृणभूम्यादिरसप्तार्घ्य सुनृत अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानस्य कोपः भूतपूर्वः सा क्षुत्रिभ्यामृतात्मनः ब्राह्मणं प्रतिभूत ब्रह्मन् वत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्मरिसेरंसे गता समृगं तुषां निर्गच्छन् तनुष्कोट्यान्धाय प्रमागमते सखिं निवृताशैषकर्णो मिलिते क्षणा मुषा समाधिरावोत्सित किं नुक् स्यात् चित्रबद्धभिस्तथा तस्य पुत्रोत्सेविरन् बालकोर्भके तदाज्ञां प्रवृतं तातं श्रुत्वं तत्ते तदमब्रवीतो धर्मापालानं पिन्वां बलिभुजामि वा स्वामिन् निगम्य दासानां द्वारपानं सुनामि ब्राह्मणै छन्तु बर्हि द्वारपालो निरूपिता सकथं तद्गृह स्वास्था सभाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गति भगवती शास्त्रयुत्पतगामिनां तन्भिन्न सेतु नद्याहं सास्मि पश्यत मे बलम् इत्युक्तारुस्तां राक्षो वैस्यान् श्रीबालकः कौशिक्यापुपस्पृश्य वाग्वज्रं ससर्जः इति लङ्घितमर्यागं तक्षकः सप्तमे हनिः दङ्क्षन्ति स्म कुलाङ्गारं नोदितो मे तद्द्रुहं ततोऽप्यदेताश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोर्रोधः सवा आङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा स्तुविलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगं विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्सकर्माधिरोधिसि केन वाते अपकृतमित्युक्तः स निवेदयत् निशप्य सप्तमदर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजप्यनन्दत् अहो बताङ्गो महदज्ञते कृतमल्पि यसीद्रो उरुद्धमो धृता सवै नवै नरदेवं पराख्यं सम्मातमर्हस्य पक्वबुद्धे यतेजसा दुर्विषेण उक्ता विद्यन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजा लक्ष्यमाणो नरदेव नाम निर्थाङ्गपाणा वयमङ्गलोके लोकः तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्क्ष्य तिरक्षमाणो विवरूथ वत्क्षणात् तदद्य न पापं वैत्यनन्वयं यन्नश्नाथस्य वर्षोर्विलोम्पकात् परस्परं ग्रन्थि स्मन्ति कुञ्जते पशून् स्त्रियोत्थान पुरुषस्य भोजना तदा यधर्मस्य विलीयते नाम्ना समाचारयुतस्त्रीमया तत्रोत्कामाभिनिवेशितात्मनां सुनाम कुपीनां विवर्णशङ्करः धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राट् बृहच्छ्रवाः साक्षान् महाभगवतो राजर्षि हयमिति आक्षुत्रिसमयुतो दीनो नैवास्माच्छापमर्हति पापेषु सुवृत्तेषु बालेना पक्वबोधिना बाभं पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्लब्धा क्षिप्ता क्षिता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभोऽपि इति पुत्रकृतागेन संतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो रागः राज्ञा नैवागं तदचिन्तयत् प्रायशः साधवो लोके परिद्वन्द्वेषु योजिता निवर्तन्ति नश्यन्ति यत् आत्मा गुणाश्रय स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम संहितायां प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलमनं नाम अष्टादशोऽध्यायः श्री बालकृष्ण चरणकमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय थैकोनविंशोऽध्याय श्रीसूत उवाच महीपतिस्तत्त्वत्कर्मर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुधर्मना ओ मया नीचमनारिवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि ध्रुवं ततो मेत्कृतदेवहिल्नाद्वृत्यं व्यसनं नाद्दीर्घात् तदस्तु कामं त्वग्निस्तताय मे यथा न कुर्यां प्रेम मद्धा अद्यैव राज्यं मृद्धकोशं प्रकोपितो ब्रह्मकुलानुलो मे तत्तु भद्रस्य पुनर्न मे भूत्पापीयसि दीर्घ्विजदेवगोभ्या देवगोभ्यः सचिन्तयन्नितिमथा शृणोत्यथा मुने सूक्तो नृत्यस्तक्षकाख्या सदानुमेन चेण तक्षकात् अलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अथो विहाये मम मुञ्चलोकं विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत्प्रायममर्त्यन्
द्याम या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेणव व्यधिका मुनेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कस्तां न सेवे तमरीष्यमाण इति व्यवच्छेद्य स पाण्डवेय प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्यां दध्यौ मुकुन्दा ग्रीमनन्यभावो मुनिव्रतो समस्तसंग तत्रोक्मजगमुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनया सशिष्या प्रायेण तीर्था धिगमापदेशै स्वयं हि तीर्था निपुनन्ति सन्तः अत्रि वसिष्ठ च वनशरद्वान् अरिष्टनेमे भृगुरङ्गिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उतत्य इन्द्र प्रमदेर्मबाहु मेधातिथिर्देवल आष्टिसेनो भारद्वाजो गौतमपेपलाद मैत्रेय और्वा कवसा कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान्नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षेय प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे सुकोपविष्टे स्वथते सुभूय कृतप्रणाम स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास सविविक्तचेता उपस्थितोऽग्रे विगृहीतपाणि। श्रीराजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूरात् विशिष्टं पथकर्ह्य कर्म तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहसुभीक्षणं निर्वेदमूलोद्विजसापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमासु दत्ते तं मोपयातं प्रतिवत्तो विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमीसे द्विजोपसृष्टकस्तक्षको वा दशत्फलं गायत विष्णुगाथा पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गस्य ददाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र तमो द्विजेभ्यः इति स्म राजा द्विषायुक्ता प्राचीनमूले सुकुशेष धीरा उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यस्तभार एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसंज्ञा प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्द्वन्द्वभयश्च नेदो महर्षयो यै व्यपुसमगात्ताये प्रशस्य साद्वित्यनुमोदमाना मोचो प्रजानुग्रहशीलसारा युत्तमश्लोकगुणाभिरूपं न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु यध्यासनं राजक्रीचजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामा सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं रजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधान आशुत्त तदृशिगणवचः परीक्षित समं वदुच्युत गुरु चाभ्यलीकम् आभासतैना न विदन्त्य भुक्तान् शुश्रूषमाणश्रितान् विष्णो समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्धरास्त्रपृष्ठे नेहात वामत्र चक्रश्च नास्ता ऋते परानुग्रहमात्मशीलं ततश्च वा पृच्छमेवं प्रपृच्छे विप्रसभ्य विप्रावर्तिकृत्य तायां सर्वात्मना व्रियमाणेश कृत्यं शुद्धं च तत्रां शताभियुक्ताः तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्ष अलक्ष्यलिङ्गो निज
लाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवे तं व्यष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबावन् सकपोलगात्रं चार्वायताक्षो न सतुल्यकर्ण शोभ्वाननं कं बुसुजातकण्ठं निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसम् आवर्तनाभिं वल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभं श्यामं सदापि च वयोङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्योत्थितास्ते मुनया श्वासनेभ्यस्तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसं सविष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपर्या शिरसा जहर ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजिता संवृतस्तत्र महान्महीयसा ब्रह्मर्षिराज देवर्षि संघै व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्ग्रहक्षतारा निकरै परीता प्रशान्तमकुशी नम कुण्ठवेदसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्यमूर्ध्ना वहितकृताञ्जलिर्नत्वा गिरा सोनृतयान्वपृच्छ श्री परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबन्धव कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य सुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः सान्निध्यात्ते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरा अपि मे भगवान् प्रीतः
कृष्ण पाण्डु सुतप्रिय पैतृस्वसे प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात्तबान्धवा अन्यथा ते व्यक्तगतेर्दर्शनं न कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसा अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृविप्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहे सुगृहमेधिनां न लक्ष्यते यवस्थानामपि गोदोहनं क्वचित्। श्रीसूत उवाच एवमाभासितः पृष्टः स राज्ञाश्लक्षणया गिरा प्रत्यभासतधर्मज्ञो भगवान् बादरायणी। एवमाभासितः पृष्टः स राज्ञाश्लक्षणया गिरा प्रत्यभासतधर्मज्ञो भगवान् बादरायणी। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकागमनं नामैकोनविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रथमः स्कन्धः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।